एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आज फिर से हम अपने मॉक टेस्ट सीरीज डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे एक नए ऐप के साथ। बट बिफोर दैट, डू रिमेम्बर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन सो दैट यू कैन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे अपडेटेड। इन केस आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, डाउट हो, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो इस ईमेल आईडी के थ्रू, या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हो इस पर्टिकुलर नंबर पे। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट करें, जहाँ पे कि आपको डिटेल में पता चलेगा वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में, द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू दैट। तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में एक नए एक्ट से रिलेटेड मॉक टेस्ट डिस्कशन करेंगे, एंड दैट पर्टिकुलर एक्ट इज द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एक्ट्स फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। नाउ मूविंग अहेड विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ डिस्कशन फॉर टुडे इज द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 वाज नोन एज द। सो जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इनिशियली आया था, इनैक्ट हुआ था, इट वाज नोन बाय सम अनदर नेम and later on it was changed to the Banking Regulation Act 1949. So which of these is the correct option for this particular question? And the correct option is A, which is Banking Companies Act 1949. So जो Banking Regulation Act है वो रेगुलेट करता है क्या? सारी बैंकिंग कंपनीज को इंडिया में। ये जो है एक्ट पास हुआ था एज अ बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 में, जो कि पास हुआ था 16th of March 1949 में। लेटर ऑन जो नेम है वो चेंज करके रखा गया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड इट वाज इफेक्टिव फ्रॉम 1st of March 1966। सो अगर आप में से किसी को ये बात ही पता है तो ये आप जान लीजिए, क्योंकि इस एक्ट से रिलेटेड ये वन ऑफ बेसिक एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच मेंशंस नो कंपनी अदर देन अ बैंकिंग कंपनी शैल यूज एज अ पार्ट ऑफ इट्स नेम और इन कनेक्शन विद इट्स बिजनेस, नॉर शैल एनी कंपनी कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया unless it uses as a part of its name at least one of the dash word. And the correct option for this particular question is D, which is bank, banker or banking company. Section 7 इससे related provision lay down करता है, जो कि mention करता है use of words bank, banker, banking or banking company. No company other than a banking company shall use as a part of its name or in connection with its business any of the words bank, banker or bank, and no company shall carry on the business of banking in India unless it uses as a part of its name at least one of such words. Question number 3 हमारा कहता है, can a banking company incorporated in India have a director in its board of directors, any person who is a director of any other banking company? So you can see the various options displayed on the screen, और इसका सही आंसर है A, which is no, it is not allowed, it is not permissible. Section 16 बोलता है prohibition of common directors. So there is a prohibition which is provided with respect to this particular aspect of the banking company, and this particular section mentions no banking company incorporated in India shall have a director in its board of directors, any person who is a director of any other banking company. Now moving on to our question number 4, which mentions what are the various grounds on the basis of which RBI may cancel license granted to the banking companies. यहाँ पे एक और important बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये question related है cancellation of the license which is granted to the banking business. So RBI किस grounds पे cancel करेगा? इसके अलावा जो important है, जो बैंकिंग कंपनीज हैं, जो बैंकिंग बिजनेस कर रहे हैं इंडिया में कंपनीज, उनको बेसिकली लाइसेंस कौन ग्रांट करता है टू गो अहेड एंड कैरी ऑन दैट पर्टिकुलर बिजनेस? तो उसका भी ऑप्शन जो है आपका आरबीआई है। सो ये आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई जो है लाइसेंस ग्रांट करता है बैंकिंग कंपनीज को फॉर गोइंग अहेड एंड कैरिंग ऑन द बैंकिंग बिजनेस इन इंडिया, एंड एट द सेम टाइम इट हैज अ पावर टू कैंसिल द लाइसेंस व्हिच इट हैज ग्रांटेड ऑन वेरियस ग्राउंड्स, और ये क्वेश्चन उस ग्राउंड्स के बारे में बात कर रहा है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ई। तो ये 3 ऑप्शन हमारा सही है। सेक्शन 22 में आप देख सकते हो लाइसेंसिंग ऑफ बैंकिंग कंपनीज के बारे में मेंशन है, एंड वहां मेंशन है सबसेक्शन 4 में कि रिजर्व बैंक में कैंसिल अ लाइसेंस ग्रांटेड टू अ बैंकिंग कंपनी अंडर दिस सेक्शन इफ द कंपनी सीजेस टू कैरी ऑन द बैंकिंग बिजनेस इन इंडिया, और इफ द कंपनी एट अ टाइम फेल्स टू कंप्लाई विद एनी ऑफ द कंडीशंस imposed upon it under subsection 1, or at any time any of the conditions which are referred to in subsection 3 and 3A is not fulfilled. Now question number 5 हमारा बोलता है no banking company shall hold any immovable property howsoever acquired, and you can see again the various options. ये बहुत near और confusing options होते हैं, तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। Correct option is B, which is except such as is required for its own use for a period exceeding 7 years from the acquisition thereof or from the commencement of this act, whichever is later. इससे रिलेटेड प्रोविजन है सेक्शन 9 में, जो कि मेंशन करता है डिस्पोजल
of non-banking assets. So it mentions no banking company shall hold any immovable property howsoever acquired except such as is required for its own use for any period exceeding 7 years from the acquisition or from the commencement of this act, whichever is later. Now moving on to our question number 6, which says who has been vested with the power to establish the Depositor Education and Awareness Fund as per section 26A of the Banking Regulation Act. इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है? Basically RBI, SEBI, Tribunal, Central Government, RBI on the recommendation of the Central Government, and the correct option is A, which is RBI. So the RBI has been vested with that power. Section 26A बोलता है establishment of the Depositor Education and Awareness Fund. Reserve Bank shall establish the fund to be called the Depositors Education and Awareness Fund, which will be referred to as the fund under the Act. So RBI has been vested with that power. Now moving on to our question number 7, which mentions Banking Regulation Act came into force on. So enforcement date, enactment date, ये बहुत basic but important again होता है, हमें इसे ignore नहीं करना चाहिए with respect to any of the acts. Banking Regulation Act की बात करें तो correct option है हमारा 16th of March 1949. So Banking Regulation Act regulates all the banking companies in India. It was passed as the Banking Companies Act, came into force on 16th March 1949 and changed its name to Banking Regulation Act from 1st of March 1966. Now moving on to our next question, which is question number 8. It mentions a banking company incorporated outside India can commence its business in India only when it has a minimum paid up capital and reserve of, and the correct option is 15 lakh, which is option C. Section 11 subsection 2A, the aggregate value of its paid up capital and reserve shall not be less than 15 lakh of rupees, and if it has a place or places of business in the city of Bombay or Calcutta or both, 20 lakh of rupees. So with this we come to an end of our discussion with respect to the Banking Regulation Act. Stay tuned to the channel, stay updated, and make your preparations 50% faster with us at iExamBee.